बस हो गया वैसे 7:10। चलो शुरू कर दो। जय भीम टू ऑल ऑफ यू। एज यू आर अवेयर दैट हम लोग संविधान समालोचना लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टू सेलिब्रेट 75 years ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे इज 15th lecture. Title of today's lecture is Ambedkar's Idea of Minority Rights in a Democracy, and we have a distinguished speaker, Dr. Manzoor Ali, from Giri Institute of Development Studies, Lucknow. Dr. Manzoor Ali has done his PhD from GNU, and he has been constantly working on the issues of Mr. Ambedkar. And he before joining GIDS, he was posted as a research officer in CBGA, and in CBGA he has led many projects and on the basic issues, and he has a brief institute as guest faculty also in Nelson Mandela Center for Peace and Conflict Resolution. He has published various articles on Dr. Ambedkar's contribution in national building, others. Over to you, Rashmi sir, if you want to add something before he starts. Muted. म्यूटेड है सर आप। सर सॉरी बोलिए। हाँ, आप कुछ बोलेंगे मैं इनवाइट करने नहीं से। नहीं नहीं, ओके गो हेड सर। ठीक है मंजूर जी, आपके पास अराउंड 40 मिनट्स हैं और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, पीपीटी कोई है क्या अब या फिर नहीं, पीपीटी अगर वो डेटा वगैरह रहता तो मैंने सोचा नहीं, कि जो ठीक है है ठीक है, बहुत अच्छा है, तो वो हाँ। जरूरी नहीं है। हाँ और तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं। कुछ एकेडमिक्स हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। सो अकॉर्डिंगली आप अपना लेक्चर करिएगा ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक जी। है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जो है डॉक्टर विनोद साहब एंड सीडीएस फॉर इनवाइटिंग मी to this lecture series, and I congratulate CDS for having the already 14th lecture on Dr. Ambedkar Constitutions and Democracy. So in continuation of that, as you have been aware that my topic is about looking at Ambedkar, delving into the Ambedkar's idea and what he was thinking about minority rights actually, and how his idea of democracy and the minority, if we rope in together, bring the just society. So the whole idea of Ambedkar to have a just society is like interpreting and giving goal to the what kind of a democracy we should have, and it has been long back, and this paper would like to have of course there are three four major idea that of course Ambedkar's own idea, his own personality, how it has come up in the history, and then we have a democracy to discuss about, and of course there are multiple form of democracy we have, and we are going to discuss what liberal democracy. And as you know that if you are a student of political science, we know that democracy itself is not a very ideal condition for Aristotle and the Plato, those who were they hate democracy for and they found that the democracy is a deviant form of rule to govern the people. But since then, there has been lots of addition happened, and the new future associated with the democracy, and how the democracy and liberal democracy comes together and become a guiding principle for majority of the population across the globe. Then we have minority rights to discuss about in the context of India. And next in the structure would be contemporary status of democracy. And I'll comment very briefly about status of minority into this contemporary status of democracy, and how Ambedkar has warned about the contemporary status of democracy, and and then I'll conclude what is to be done. So these are the structure that I'm going to like follow, and to start with, that Ambedkar, when
was inter ఇప్పుడు అవుతున్నట్టు 2 అయింది uh, ఇంకరెక్ట్ గా there is some disturbance that is happening, please. Okay. As we know that Ambedkar since his childhood, and when he grown up, and then when he become the drafting committees of the constitution's chairman, and then we have his whole journey. The essence of that journey is that he wanted to build up a society, a just society, a society which is based on justice, and for that he looked into different kind of philosophy. Actually, he looked into communism, he looked into socialism, he looked into liberalism, and then tried to find out something good from each of the this philosophy, and how it can become liberatory principle for his people, the depressed class in India, and the universal principle that he founded become common goal for the people and other people as well. So if you look at Ambedkar, the very fundamental principle was what he adopted. I found that liberty, equality, and fraternity as a guiding principle of democracy and the ideal society he talks about. Now, I quote Ambedkar from Annihilation of Caste, chapter 14, 1936. He has written, and what he is talking about, ideal democracy and ideal society. What is your ideal society if you do not want caste? Is a question that is bound to be asked of you. If you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality, and fraternity. And why not? Ambedkar considered any opposition to liberty is reducing human to slavery. This is what he think about liberty, equality, and fraternity. And based on these three principles, he tested Hinduism, Hinduism social order, and he found that Hinduism and its philosophy is neither promoting liberty nor equality. And I quote volume 3 writing and speeches of Ambedkar, where he said that for liberty there has to be social equality accompanied by economic security and knowledge to all in the society. In Hinduism, you'll find both social inequality and religious inequality embedded in its philosophy. This is what Ambedkar thinking about at that point of time. Then there has been many historical odds through which Ambedkar has gone, and I particularly would like to mention when he was as a child, he was visiting his father in Koregaon, and how cartmans refused, after knowing that they belong to Mahar community, refused three boys to carry them to Koregaon, and the railway station master was negotiating on behalf of these three childs, and their behavior, and from there onward he started thinking. He said that this particular incident make me realize that what caste is actually about. That was the beginning of his interaction with the Hindu society. So this historical perspective help Dr. Ambedkar to lay down the blueprint of democracy. I found that what democracy should be and what democracy should not be. Both were very clear in the mind of Dr. Ambedkar, and he said democracy is incompatible and inconsistent with isolation and exclusiveness, argued Ambedkar. Ambedkar का ये कहना था कि जो जो एक्सक्लूसिव जो चीजें होती हैं, एक्सक्लूसिवनेस होती है, जहां पे लोगों को छांट दिया जाता है, सोसाइटी के बाहर कर दिया जाता है, ऐसी डेमोक्रेसी इनकॉम्पिटेबल है, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए इस डेमोक्रेसी के अंदर, जो है कि किसी को छांट दिया जाए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि अभी मैं जब माइनॉरिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट हो जाता है, ये अपने आप में जो हम देखेंगे अभी, जो है कि ये कैसे होता है, जो है. तो डेमोक्रेसी इज इनकम्पिटेबल एंड इनकॉन्सिस्टेंट विथ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस.
Ambedkar argued free India should be made safe for democracy, starting with this aim. The untouchables, in the bracket, say that on account of the peculiar social formation in India, there are many minority community pitted against a Hindu communal majority, and that if no provision are made in the constitution to cut the fangs of communal majority, इंडिया वुड नॉट बी सेफ फॉर डेमोक्रेसी। अंबेडकर वॉल्यूम 9 में पेज 199 में ये बात कह रहे हैं कि जो है अगर हिंदू कम्युनलिज्म जो मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ जो कम्युनिटेरियनिज्म है, अगर उसको उसके उसके दंश को उसके उसके जो है उसको तोड़ा नहीं गया तो वो डेमोक्रेसी के लिए सेफ नहीं होगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जब वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को, लिबरलिज्म के प्रिंसिपल को इम्बाइब कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कि लिबरलिज्म के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। इनफैक्ट जो है आप देखेंगे कि जो है इन द नेम ऑफ, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिस्कस करेंगे कि जो है स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी इन द करंट इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया, जब वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिफिनेशन अगेन, कि लिबरल डेमोक्रेसी कहता है कि भाई सभी लोग बराबर हैं और स्टेट सबको बराबर की तरह ट्रीट करेगा। जो है हम किसी को भी जो है मतलब वो नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, एवरीवन इज इक्वल। सो but Ambedkar's idea of equality was something different when he questioned that you cannot treat unequal people equally। जब गैर बराबर लोग हैं तो आप उसको इक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक पायदान पे कैसे खड़ा करके जो है आप उनको जो है मसलन एक जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी है और एक जो है एबल बॉडी है, उन दोनों को आप रेस में एक साथ नहीं दौड़ा सकते हैं। हेंस अंबेडकर डिसाइडेड to have to have some kind of a preferential affirmative action for the depressed class, which I'll come a little later. But he was very much aware about the majority society and its problem, and he feared that a society with Hindu majoritarianism would produce communal majoritarianism rather than political majoritarianism, which was treated as a progressive. Ambedkar was very much conscious was this two majoritarianism, the political majoritarianism, of course in the democracy आपको देखेंगे कि भाई लोकतंत्र में जिसकी जिस तरीके से संख्या होती है उसमें जो है लोगों का चुनाव होता है, वो बात उस तक मेजोरिटेरियन सही है कि पॉलिटिकल मेजोरिटेरियन, लेकिन एक खास तबके के लोग, एक खास धर्म के लोग, एक खास ट्राइब के लोग अगर सत्ता पे हावी हो जाए तो वो कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है अंबेडकर के हिसाब से जो है। And he has said a lot about this against the communal majoritarianism. अब उसके बाद हम आते हैं कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर आई कोट वॉल्यूम 1 पेज 270, otherwise the parliamentarian democracy will bring majoritarian rule which may not respect the minorities' will. Dr. Ambedkar was apprehensive of the majoritarian will. He said that, is this majority tolerant? Does this majority recognize equality, liberty, and fraternity? Will this majority permit me to live, to breathe, to grow? Like इस हद तक जो है कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ जो है अंबेडकर का एक था, वो उस बात को सोच रहे होते हैं कि अगर हम इसको परमिट कर देंगे जो है डेमोक्रेसी के नाम पे, तो ये अल्टीमेटली एक हैवक क्रिएट करेगा माइनॉरिटीज के लिए। इसलिए जो है उन्होंने जो है इसको काफी जो है क्रिटिकली एनालाइज किया था। ना अभी एक रिकैप करने की अगर हम कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि अंबेडकर फाउंड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट हायरार्की गवर्निंग इंडियन सोसाइटी which has high possibility of bringing communal majoritarian form of democracy. In other words, that was hurdle to the idea of liberty, equality, and justice. Hence, he strived to secure the interest of depressed class in the form of preferential treatment. और वो 1919 से बिफोर द साउथ बोरो कमीशन जब आता है जो है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चंस को लेके जब साउथ बोरो कमीशन आता है तो उसके सामने जो है
डॉक्टर अंबेडकर एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो है। उसके बाद साइमन कमीशन का फिर आता है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता है, एंड ही आर्ग्यूड vehemently about the separate electorates, and which we all know that on, you know, British influenced by his argument on 17th August 1932, British government announced the award for minority included Dalit. However, जस्ट एक महीने में आप देखेंगे कि एक महीने से थोड़े एक हफ्ते में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट रिवर्स द गेन एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ सीट रिजर्व फॉर दलित वाज एग्रीड अपॉन। ये एक रिवर्सल होता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो डिमांड होता है, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ अंबेडकर लुकिंग एट एंड एनालाइजिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम विच वाज लाइक हिंदू मेजोरिटी, तो उससे जो है बचने के लिए वो एक कुछ उपाय सजेस्ट करते हैं, जो कि एक नल एंड वाइड क्रिएट 1932 के पूना पैक्ट्स में हो जाता है। However, while advocating for separate rights for Dalit under the policy of minority, he made numerous important arguments, which I shall present in a moment. कि वो कैसे जो है वो एक्चुअली आर्ग्यू तो जो है he was arguing in favor of depressed class and before the South Borough Commission, और वो माइनॉरिटी का हवाला दे रहे थे उस वक्त कि अगर आप 1909 में जो है माइनॉरिटीज को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हैं, तो include us as well in this group because we are equally, you know, deprived. That was his whole argument. तो वो माइनॉरिटी के फ्रेमवर्क में ही जो है अपने आप को जो है रख के जो ब्रिटिश से जो गेन लेना चाहते थे, he was advocating for his people. Now coming to the idea of minority इस पूरे डिबेट में जो है वेस्ट में तो बाद में आता है, एंड वी यू नो स्पेशली अराउंड वर्ल्ड वॉर टू एंड न्यू जब डिकोलोनाइजेशन होते हैं। हाउएवर द डिबेट इन इंडिया वाज मच अर्लियर, स्टार्टेड अराउंड 1884 with Hunter Commission, which acknowledged the British policy of discrimination against the Muslims. जब 1884 का पूरा जो 1884 का जब हंटर कमीशन आता है, तो हंटर कमीशन जो है पूरा वो दिखाता है कि कैसे जो है माइनॉरिटीज स्पेशली नॉर्थ इंडिया हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिश, एंड जॉब से और बाकी जगहों से जो है उनको कैसे जो है सिस्टमेटिकली जो है एक्सक्लूड किया जाता है। तो and that became the ground for Muslim League to argue for separate electorate, and in 1909 they got their demand fulfilled. However, with the partition, the reservation for Muslims done away with, state decided to stuck with the caste with preferential treatment rather than on the basis of religion, despite Kaka Kalekar 1956 argued that presence of caste among the Muslims. That then you have a Mandal commissions as well, which talks about Muslims community is not as homogenized as has been projected. Dr. Ambedkar himself highlighted this practice of caste among the Muslims, that there has been this practices. Now, despite that, in the constitutions guaranteed Muslims under Article 14, of course, that everyone is equal before the law and equal protection of law. But apart from that, Article 25 and 30, we all know that there has been this, a special arrangement for the minorities, educational institutions and their other institutions they can manage. But if you look at this, the political representation questions which were earlier granted to this community, particularly Muslims, has been clipped by the Indian state in the very beginning. S.C. Mukherjee was the head of the subcommittee on minority rights, rejected separate electorates, but reserved seat for minority. Separate electorate was premised on the view that India is not a nation, but further it raised the communal consciousness to the extent of violence. नाउ एक तरफ माइनॉरिटी राइट्स को ये कह के जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये कम्युनल कॉन्शियसनेस को जो है टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस ये कर सकता है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। और लेकिन उसके बावजूद भी एससी मुखर्जी की कमिटी, हु हिमसेल्फ वाज अ क्रिश्चियन, was heading this subcommittee of minority, he prescribed that reserved seat for the minorities. But when it comes to a final moment in 1949, Sardar Patel used few Muslims, especially Tajamul Hussain, Naziruddin Ahmad,
they were Muslim leaguers earlier. And Begum Azaz Rasool, representative from UP, in rejecting even the claim of the reserve seats. So the Muslims in the independent area neither got the political representations. Separate electorates was already rejected, and the seat reserved for them was also rejected by on the insistence of Sardar Patel, and it has been vividly captured by many of the book which is focusing on political representation and marginalization of Muslims. So it has been, what does it mean? The deprivation of the political representation mean? And I'll again try to quote, Ambedkar, bring here and discuss when you try to, cut down on political representation, what impact it happened on, it influenced the minority at what level. So Ambedkar in volume 1, he said, in material sense, in material sense, a Hindu can represent a Muslim in a territorial representation. However, it will only represent one half material representation of the popular government. Personal representation will remain amiss. The growth of personality is the highest aim of the society. Social arrangement must secure free initiative, an opportunity to every individual to assume any role he is capable of assuming, provided it is socially desirable. A new rule is a renewal and growth of personality. But when an association, and a government is after all an association, is such that in it every role cannot be assumed by all, it tends to develop the personality of the few at the cost of the many. A result, to be avoided in the interest of democracy. This is Ambedkar telling the people what political representation, when you snatch away political representation from the community, and we all know that Ambedkar was very much in favor of a community represented by the community member itself. And here he said that if something one can represent territorially, but personal representations will remain amiss. So to be specific, it is not enough, and this is Ambedkar. To be specific, it is not enough to be electors only. It is necessary to be a lawmaker. Otherwise, who can be lawmaker will be master of those who can only be elector. It's pretty such a clarity Ambedkar had, with the deprivation of political representation effect on a community. So Indian Republic basically start with remolding or I would say that compress the rights of minority in the compressed form. In fact, if you analyze the situation of political rights of minority, especially Muslims, in the very beginning of the Republic, many scholars, and I quote few, S.A. Kamali, Musrul Hassan, Paul Brass, Balraj Puri, of course, they say that Muslim politics were anathema in free India today. Kamali is talking using this word in 1955. And later on, Paul Brass in 1965, Musrul Hassan at number of places, they talked about that, the system had completely crippled the Muslim political organization to remain independent. Either you are in a Congress or nowhere, or just shunt your political idea and action and remain silent. That was with what Muslim began in the since independence. Status of minority since 1947 and until 2025. It is not very encouraging. As I mentioned already about Kaka Kalekar committee report, which was submitted in 1956. He talks about heterogeneity within the Muslim community. Similarly, Mandal Commission report, which was submitted in 1980, of course, it is talking about the caste system and the material deprivation of the Muslims. In fact, if you around 1955 or 56, there were Muslim organization, which were talking about economic and economic and material and political deprivation of the minority community in 50s only.
But this is the central government reports that we're talking about. So more legitimacy to the whole idea that Muslims were deprived and have been deprived since the very beginning. So Kaka Kalekar committee, Mandal commission report. Again, you have a Gopal Singh committee report, which was not tabled, but it was in 1983. Such a committee report, 2006. Raghunath Mishra committee report, 2008. Kundu report, 2013. Have been the national reports. Glaring pointed out the misery of the Muslims in India. Now, just see the picture since 1947 until 2025, and the Hunter Commission report that is coming in 1884. What is changing? Just because of the and many scholars agreed on this point that due to the partitions, Muslim lose whatever they gain in 2 or 3 decades prior to independence. They lose everything, and the remaining masses here remain voiceless, and no actionable leaders were present at that times. So it reminds of Hunter Commission, and that too like more than 100 years back, that 1884. These committees that I named it. One can argue that majority of the Muslims are now. One can argue that since Mandal commissions included lots of caste into this central list, and many of the state is bringing Muslim many of the caste into the OBC list, and they are getting benefit of the reservation both in the center and the state. So why that is not working? I would say that it is working. It's not like that it's not working. But before that, just to look at the deprivation side, the picture is worker participation ratio. Muslims worker participation has been increasing across the gender and area. However, it is below the national average of all religious groups. Rural male working participation ratio in 17-18 was 47%, which goes up to 56%. Similarly, for urban male also, it has been like moving to 2 percentage point. However, if you look at the Muslims, both and male and female, their working participation ratio is lower than the cumulative national average, and second, it is lower than the Hindu counterpart. In 2018-19, unemployment, again, Muslim women suffer the highest unemployment rate among all categories. One can argue that majority of Muslims are treated as obviously why they haven't benefited. Now, I'd say that they have been benefited, but the volume, if you have to look at the quantity size as well, how many people are getting benefit of these things, and at what level they are picking up this how this reservation is actually helping or influencing the social and economic mobility of a community. Maybe it has been partial, but the major problem is that, and I would again like to bring Ambedkar here, when he said that you cannot treat unequal people equally, and you bring Dalit Muslims, although that has been not a category recognized by the state, but there has been the caste equivalent to the Hindu or Dalit so-called, who come into the SC category. There are contemporary Muslim caste in the Muslim caste available there in the community itself. So and the OBC, if you compare Hindu OBC with the Muslim OBC, the Hindu OBC are far ahead of these people. तो आप देखेंगे कि जो बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है कि हम कितना बेनिफिट रिजर्वेशन से ले पाएंगे, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारा एजुकेशन किस तरीके का है, क्या हम वो ले पा रहे हैं, क्या हमारी आर्थिक स्थिति किस तरीके के, इनफैक्ट द होल बास्केट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज हमारा क्या है, हमको ये देखना पड़ेगा। वो हमें एक सिक्योरिटी नेट डेवलप करके दे पाता है कि नहीं दे पाता, ताकि हम उस पे बिल्डअप करके
और अपने रिजर्वेशन के बेनिफिट से सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी को अचीव कर सके जो है। एक फिगर मैं कोट करना चाहूंगा 2011 सेंसस का, 25% ऑफ ऑल बेगर्स, इट मींस एवरी फोर्थ बेगर वेर द मुस्लिम्स। ये सेंसस का डाटा है जो है। अब so other argument is also that many people think that कि यार रिजर्वेशन और बाकी सहूलियतें तो हैं, मुस्लिम डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, दे प्रिफर्ड मदरसा. I would say that I would reject this argument. I have seen where this is coming from. I have analyzed this whole Muslim don't like to send their children to school is basically coming from, and I analyzed lots of secondary material and found that it's a propaganda. In a sentence, it can be refuted as a propaganda material. Now coming to the contemporary phase of the democracy, and we found that बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये कंटेम्प्रेरी फेज ऑफ डेमोक्रेसी है जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही यूज कर रहा है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही यूज कर रहा है एक्सक्लूड करने के लिए. नाउ यू रिमेंबर अंबेडकर, व्हाट ही अंबेडकर सेड, कोई भी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अगर एक्सक्लूड करता है, बी इट डेमोक्रेसी इटसेल्फ, इट इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द आइडियल सोसाइटी. ये हो नहीं सकता. लेकिन here in the contemporary phase of democracy, constitutionalism through I don't want to go into very detail of how judiciary is functioning, how other democratic institutions are functioning, but लब्बोलवाब यही है कि essence is that this institution has been excluding people right now in the current phase of democracy, depriving the minority using the extreme liberal principle, सबका साथ सबका विकास, everyone is equal. You remember, this is the third time I'm bringing Ambedkar when he said you cannot treat unequal people equally, and here we are saying that सबका साथ सबका विकास, or we believe in what the current regime believe, that we believe, they say that, and it's a stated policy in Kamal Sandesh. If you read their whole articles on secularism, they say that we believe in positive secularism. And what is that positive secularism? That we don't discriminate. So the policy for everyone is the same. Now it is contrary to what Ambedkar has said. अंबेडकर ने जो कहा था उससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी ये जाके जो है बात कर रहे हैं. एक्सट्रीम लिबरल प्रिंसिपल को लाके आप कह रहे हैं कि सभी बराबर है. ये बहुत अच्छा लगता है सुनने को कि हम सभी को बराबर है. बट व्हाट अंबेडकर हैज सेड दैट यू नीड a space within this political system which is dominated by the communal majoritarianism, कि एक हमको स्पेस, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक अफर्मेटिव एक्शन चाहिए जो हेल्प कर सके जो है डिप्राइव सेक्शन को, मार्जिनलाइज सेक्शन को. सो and abhi if you look at Farad Sahab has done a lot of work, Abdul Saban in 2018, 13, Bhalla and Leo 2013, ASI 2021, and many other have highlighted the discrimination against the Muslim in general and in the market. It's that has also been very clear now. So it is important to bring Ambedkar's argument here, who was defending a special treatment for depressed class. This is my argument. And when he was, and that is also important, when he was, defending his special treatment, preferential treatment for depressed class, what was the counter argument put forward before the general public to consume? They said that it instigate anti-national feeling. At that time, prior to independence, they were saying that if you give preferential treatment to these people, it will bring separatism and anti-national feeling. Now, I would like to quote Ambedkar again in volume 1. Unlike generally understood, communal representation need not necessarily harden social division. This is Ambedkar's word. It could be a way of dissolving them by bringing together men from diverse castes who would not otherwise mix together in the legislative council, and by begetting new form of associated life. Such association could be threatened facile way of life and help dissolve
sect attitude. This is Ambedkar. The argument that separate electorates would reinforce an anti-national spirit, he felt, Ambedkar thought that was a baseless, as not every group demanding separate electorate was anti-national. The demand need not necessarily have a religious or communal nexus. A majority, however, according to him, cannot have a separate electorate, as it would result in a permanent domination of the majority over the minority. This is Ambedkar. So clear. Hence, I would argue that, and that Muslim need Ambedkar's ideas, action on, and both in idea and the practices to tilt Indian democracy favoring social justice. What he said, we must not only be staunch in our faith in democracy, but we must resolve to see that whatever we do not help the enemy of the democracy to uproot the principle of liberty, equality, and fraternity. The single most important value of democracy is non-discrimination. This is the word of Dr. Ambedkar, Words of Freedom, Ideas of a Nation, 2010. We have to, and this is what I would like to conclude on this note. When Ambedkar is saying that single most important value of democracy is non-discrimination, what is the way out of all this, the current phase of democracy, which is like using extreme form of liberal idea like sabka saath sabka vikas, and using democratic institution and constitutionalism itself to exclude? We have to generate a public opinion forceful enough, seeking the reinterpretation of Dr. Ambedkar's constitution as guiding principle of social revolution as understood by Granville Einstein in 1966. The constitution, the way he saw Austin in 1966, is its seed of social revolution. We need that. And if you look at Suraj Angre and another author, I'm forgetting his name, they say that we have to bring back radicalism of Ambedkar in the field to defend the constitutions, to defend the democracy, and so the minority rights. I conclude with this and stop here, and we'll discuss in the question and answer session. Thank you so much for giving me this opportunity, CDS. Vinod. Vinod ji. Hello. Hello. Dr. Vinod, can you? No, please, anybody ask questions, please free to ask him. Yeah. Sorry. I have So one question. thank you, Manjur Ali. Thank you. I think Vinod also is came. Thank you. I- Sorry, मेरा connection चला गया था. Please ask So questions. it was very Please great open discussion. the discussion, And Vinod ji. Dr. Manjur Ali, आपने काफी Sir, डिटेल I में have one उसको समझाया question. हमें, और अभी समय है हमारे पास, so we can take some questions. Yeah. तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए. सर मेरा एक Somebody is सवाल है. asking, Vinod ji. Somebody is asking. Okay. Yeah, I think Mahendra ji is asking. Yes. तो जब शेड्यूल्ड कास्ट को भी डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटी अनम्यूट कर स्टेटस लीजिए. दिया था. आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है आपकी. नहीं, मैंने अनम्यूट किया यहाँ से हुआ तो है. खुला है बट No, his voice is audible. बोलूं मैं? हाँ, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहले शेड्यूल्ड डिप्रेस क्लासेस और शेड्यूल्ड कास्ट को भी माइनॉरिटी स्टेटस के तहत ही उन्होंने आर्ग्यू किया था, इनको फैसिलिटी दिलवाई थी. तो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी स्टेटस कब विड्रॉ हुआ? इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ या उससे पहले ही हो गया था? ये मेरा सवाल. नहीं, या 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद उनको वो हक था.
फिर एक कमेटी टिल बनती है। 47 हक था। हाँ, हक था। ओके और वो ओके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, जब 19 ये जो एडॉप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिपब्लिक ऑफ नया। इंडिया जब बनता है, उससे ओके ठीक पहले एक जो कमेटी बनती है जो एस सी मुखर्जी के अंडर में होती है, माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके हेड जो होते हैं सरदार पटेल होते हैं। ओके तो वो उस वक्त जो है रिकमेंड करती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम आपको नहीं दे सकते, बट आपको रिजर्व सीट हम दे सकते हैं। बट वो आफ्टर ऑल वो रिजेक्ट कर दिया जाता है फाइनली जो है उस कमिटी के द्वारा, विच वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। तो टिल 47 Muslims were having reserve seats, या Christians दैट वाज were having reserve seats till रिजर्व सीट। 47। उस वक्त जो जो इलेक्शंस होते थे, वो दो सीट्स, दो तरह के सीट्स होते थे। एक मुस्लिम्स को इलेक्ट कर रहा है, और एक जनरल सीट्स होते थे जो है, विच वाज आल्सो फॉर द दलित एज वेल। ओके, वो भी था। you have named number of committees in हाँ, independent India। तो वो कमिटीज, जैसे हमें जो दो का पता है, काका कालेलकर और मंडल, you had named 3 4 other committees also, what were they? such a committee in 2006, Okay it was such a committee, such a committee, such as okay Justice Rajendra Sachar was heading that committee on the minority. Then we have Rangnath Mishra committee report. It was called a National Linguistic and Minority Committee report. Then you have a Kundu committee report, which was the accent taken report on the such a committee report itself. So there are a number of committees. Then Gopal Singh committee report in 1983, but it was not tabled in the parliament. But it talks about deprivation of the minority community. That was meant for that. And after that, Indira Gandhi launched 15-point programs, prime minister programs at that time. So when Manmohan Singh came, he renewed that 15-point programs for the minorities. So it has this historical background, trajectory. thank you। नवीन भाई आप नवीन जी कुछ कह रहे थे शायद। हाँ ये So thanks a lot. I think you cover lots of things. मुझे लगता है आपने बहुत पास्ट और प्रेजेंट दोनों को बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती से कवर किया है। So I think if you analyze the present political situation, it is very easy to say कि holding election in the only the every 5 years to elect the representatives only 50 and 20% of some community is cannot be the democracy. I think you beautifully defined that. I think in that sense, Baba Sahib has already written the book Untouchable, and in that book he mentioned very beautifully untouchability among non-Hindus. It means he identified something going up, something going absolutely other than the Hindu. अब मैं वर्तमान समय में आपकी राय जानना चाहता हूं प्रोफेसर, क्या आज की राय में जो अनटचेबल आज की तारीख में जो लीगल स्टेटस में शेड्यूल कास्ट है और जो मसावात की जंग है वो अभी भी बाहर है, तो क्या आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना लीगली हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्या प्रैक्टिकली हो सकती है कि अलाइनमेंट बिटवीन untouchable scheduled caste or untouchable non-Hindu? Is there any possibility? Do you see that? Are you able to listen me? Yeah. Manjur Aligar, please. Should I repeat again or it is over now? Manjur Aligar, are you listening? Sorry. I missed your question because of this internet link and all that. Please repeat, Naveen. Yeah. ब्रीफ में आप बताएं। सॉरी। Okay. Should I repeat again? अगर मैं प्लीज ये प्लीज। कहूं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव दैट लिए जाते हैं, हाँ और यू वो आर टॉकिंग अबाउट 15-20% में से लिए जाते हैं, 80 बिल्कुल बाहर है। अगर यही डेमोक्रेसी है जो बाबा साहब ने नहीं मानी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा था कि अनटचेबिलिटी नॉन हिंदूज में भी है,
तो क्या आज की तारीख में, वर्तमान समय में, क्या जो अनटचेबल, आई एम यूजिंग द शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स द लीगल वन, और अनटचेबिलिटी अदर, मसावात की जंग, यू डू अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुली। तो क्या आपको लगता है कि आज कोई पॉसिबिलिटी लीगली उनके लिए संभव है? पहला प्रश्न, अगर उनके लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं, दैट इज, क्या इनका प्रैक्टिकल संबंध हो सकता है क्या? जो अनटचेबल मीन शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल मसावात के जंग वाले, क्या ऐसी कोई संभावना दिखती है? आपकी राय क्या है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्रश्न है जो है। इनफैक्ट अभी अभी मैंने एक आईसीएसआर का प्रोजेक्ट था पसमानदा पे, मैंने उसको जो है कंप्लीट किया, एंड आई वाज लुकिंग एट दिस क्वेश्चंस आल्सो। आई डोंट थिंक देयर इज अ लीगल पॉसिबिलिटी, ये इम्पॉसिबल है अभी के डेट में, इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता, मतलब अभी कि यहाँ की रूलिंग एलीट जो कि, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी स्टिल इट्स अ कम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म में जो चली गई है, although I am not using the word many scholar have been used for Indian democracy right now. It's not so I'm not using those words. I'm just saying so it's not possible to have a legal status for these people. But on the second question, it's yes, it is highly recommended, desirable to have a practical link between these groups, and it's immense possibilities. The only thing is that they are lacking agency, and they are, first thing first, they lack agency, and second thing that there has been consistent effort to create some kind of differentiation between these two peoples, and a consistent effort has been going on, a propaganda has been going on that you are different from these people, and so try to वो लोग इस यूनिटी को जो पॉसिबल हो सकती है उसको हार्म पहुंचाने के ऑलरेडी कयादत में लगे हुए हैं जो है। सो इट्स दे आर हैम्परिंग दिस प्रैक्टिकल अप्रोच एज वेल। सो उसको हमको दुरुस्त करना पड़ेगा जो है आने वाले समय में। क्या जो मंडल कमीशन में इमाम बुखारी को बीपी सिंह लेके आए और उन्होंने जो कंफ्यूजन पैदा किया, यू नो बेटर देन मी, इमाम बुखारी के बाद, तो क्या ऐसी संभावना, यानी एक रिलीजियस हस्तक्षेप जो नॉन हिंदू हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप वो स्वीकार करेंगे ऐसा, इमाम बुखारी जैसे लोगों का हस्तक्षेप, और नॉट? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इनफैक्ट अब वो रिवर्सल हो गया है, ओ, मतलब वो रिवर्सल हो गया। मैंने एक अभी इस पे एक स्टडी इन इंडियन पॉलिटिक्स में ऑन दिस वेरी क्वेश्चंस आई हैव एनालाइज द पसमानदा लीडरशिप, and I'm sorry to say that there has been this reversal. I mean, तुम ज्यादा अगर उन सत्ता के करीब जा सकते हो तो हमारे पास भी कैपेसिटी है कि मैं सत्ता के पास जा सकता हूं जो है। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस आर गोइंग टू द, सो आई मीन देर इज दिस प्योर इंटरेस्ट ग्रुप दैट इज वर्किंग है राइट नाउ। दैट्स व्हाट आई मीन, शुरू में मैंने वही रेफर किया कि देर आर पीपल हु आर लाइक working against this practical idea of coming these two people together. थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मंजूर, अब एक मिनट कोई नहीं ले रहे, तो मैं आपसे एक मिनट और लेना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐसा समुदाय है जिसको डिनोटिफाइड बोलते हैं, नट हैं, कंजर हैं, कालवेलिया हैं, कलंदर हैं, मिरासी हैं, सो दे आर ऑल्सो आउट ऑफ दैट बॉक्स। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, डू यू सी, so they can also get presence in that within the community as well as the society as well, or religion? I mean, if you look at the state, nature of a state, current form, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं if you are so called within the macro framework of Hindu. बट जैसे ही जो है, अगर आप रिलीजियन का अगर डिफ्रेंशिएट होता है तो वो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट कि आपको 5 किलो राशन तो दे देंगे वो, बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड एंड ऑल दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क फॉर योर वोट, बट वो नहीं देंगे जो आप मांग रहे हैं जो है। इट्स इम्पॉसिबल। इट दैट इज द माई बिगेस्ट क्वेश्चन टू द ग्रुप्स हु आर रिप्रेजेंटिंग पसमानदा और एनी ऑफ दिस कास्ट ग्रुप, दैट कि आप बताओ आपका डिमांड क्या है आज के डेट में स्टेट से, एंड नोबडी इज सेइंग दैट माय डिमांड इज लाइक
this, which was, in 1998 when these people came together and say that, no, we want these things. Very clear cut political demand was there. But now they say that, no, this government is giving us, I mean, राशन दे रहा है ना, that is enough. So even they knew that कि वो possible नहीं है जो है. And there is a too much of things are going on. I mean, it will take, if I enter into these things, it will take a whole 40 minutes for me. Anybody else? कोई और साथी? हेलो जी 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 नमस्कार, मैं नंदलाल बोल रहा हूँ गाजीपुर यूपी से। सर, जी जो जात व्यवस्था में भी अलग अलग लोगों के जो धारणा है वो खत्म नहीं हो रही है। जैसे रस्सी जल जाती है, उसका आइटम नहीं खत्म होता है। यदि कहीं कोई जाता है, पूछता है कि अरे तुम्हारा नाम तो ये, मैं बताऊं नंदलाल, तो आगे तो पीछे क्या है, तो क्या है, तो ये सब कहीं ना कहीं आघात होता है सर। ये सब समाज में खत्म नहीं हो, जब तक टाइटिल रहेगी उससे उनका बोध हो जाता है कि किस वर्ग से हैं। मैं आपसे सहमत हूं नंदलाल जी, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या हुआ है कि हमें लगता है कि जाति, हमने जो है कहा कि अनटचेबिलिटी इज बैन, तो क्या आज छुआछूत आज के डेट में नहीं होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चीजें दी गई हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट की बारी आती है तो आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल जो लीडरशिप रही है उनके हाथ में रही है। तो जो प्रोग्रेसिव जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी गई थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां हैं। और साथ ही साथ हमेशा ही एक द्वंद्व चलता रहा अंबेडकर के विचार से और बाकी जो सत्ता पक्ष के विचार रहे हैं, जिसको हम सवर्ण विचार कहते हैं, उनके बीच में हमेशा ही इंडियन रिपब्लिक में एक द्वंद्व चलता रहा। और वो हमेशा चलता रहा कि कैसे जो है इस चीज को खत्म किया जाए, इस गेन को जो इन्होंने गेन किया रिजर्वेशन के जरिए, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन के जरिए, एजुकेशन में जो भी मिडिल क्लास डेवलप हुआ, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उनका उनका कुठाराघात आज के डेट में कहां पे हो रहा है? वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, एक कि रिजर्वेशन को हटाओ, दूसरा ये बात कहते हैं कि भाई SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दो जो है, ठीक है। ये दो चीज को उनको और उनको बहुत प्रॉब्लम है रिजर्वेशन पॉलिसी से, क्योंकि एक ऐसा कास्ट के अंदर से एक ऐसा क्लास डेवलप होके आ गया जो अपर कास्ट के बराबर आके खड़ा हो जाता है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और 2014 से ये प्रयास हो रहा है कि कैसे जो है राम राज्य का नाम लेके जो है कैसे जो है इस वर्चस्व को जो है वर्ण व्यवस्था में तब्दील किया जाए जो है। तो ये कभी गया नहीं था, वो छुपा हुआ था। अब 2014 के बाद जब सत्ता पक्ष ही इस तरीके का हो गया तो वो खुल के सामने आ गया। तो इनका असली लक्ष्य ही जब राम राज्य को कहते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में वही राजा राज करेगा, वो दंड देगा, वैश्य जो है बिजनेस करेंगे, शूद्र जो उनका काम है वो करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में जो है चीजों को किस तरीके से, सनातन धर्म को पहले कहते थे हिंदू एकता, अब वो कहने लगे सनातन धर्म। हिंदू एकता से सनातन धर्म की तरफ मामला बढ़ गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है नंदलाल जी की जो है उत्तर भारत में इस 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 पे कोई रिएक्शन नहीं आया जो है प्रोग्रेसिव सेक्शन से, कि जो है हिंदू यूनिटी पे तो कुछ बात हुई कि हिंदू यूनिटी है कि नहीं है और उस पे, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर जो है साउथ इंडिया से, इनफैक्ट आपको याद होगा कि तमिलनाडु के सीएम के जो बेटे रहे हैं और पिन्ना विजयराय जो केरला के सीएम रहे, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो बातें कही है, जिससे जो है वहां पे बहुत सारा जो है एक पॉलिटिकल बौखलाहट शुरू हुई। लेकिन वो साउथ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया में किसी ने जो इस पे ध्यान नहीं दिया या इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे अन्य पिछड़ी जातियों से है, जो कि वो उनके एक बहुत बड़े बेस बने हुए आज भी जो है, जो चेतना का स्तर जो है जो आपको जो है, जिसको बिहार के जो है लेनिन कहा जाता था, वो लोग हुए, ललई यादव या बाकी जो लोगों ने अर्जक संघ वगैरह बनाए थे, वो विचार अब कहाँ रह गए जो है ओबीसी के अंदर जो है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स भी एक खास हिस्से में तब रुक के रह गई है, वो कभी पेनिट्रेट नहीं की। इनफैक्ट अभी मैंने डॉक्टर विनोद को एक पेपर दिया है जो है
पब्लिश करने के लिए इसी मैटर पे है कि अंबेडकराइट पॉलिटिक्स जो है यूपी में कहां तक पहुंची और क्यों विफल हो रही है वो जो है। इस चीज पे मैंने एक जो है एक लेख लिखा है जो है शायद जो है विनोद जी को पसंद आए तो वो जो है पब्लिश भी हो जाएगा। और कोई प्रश्न? जी, पूछना है? Sir, हाँ hello. जी जी Sir, जी am I audible? जी बिल्कुल। Uh, I am from Himachal Pradesh, Engineer M.R. Dodoj. Uh, I want to know that what is the difference between the school and madrasa? Academic syllabus is the same or different? No. If different, then how are they competing the competition exams, etc.? This is my question, please. Thank you. Thank you very much for bringing this issue. Of course, school and madrasa are completely different. But अब क्या हो गया है? There has been this too many of hybrid thing is happening right now. So पहले के डेट में जो मदरसा था, अगर मैं आज़ादी से पहले की बात करूं, इफ आई गो बैक सो लॉन्ग, you find that कि interestingly the madrasa was the hub for all kind of education, philosophy, math, science, everything madrasa. Why? Right. Because it was well funded by the state, and they were like taking care of education. So madrasa at that point was school only. But with the coming of Britishers and the attack on the British Mughal Empire, and the patronage has gone, they restrict their madrasa, restrict their role to the religious education only, in a broader sense. So, and school become very different. So of course the curriculum between the school and madrasa are completely different. But now madrasa has been coming up with a, as I said, in a hybrid form. So in after independence, madrasa was really focusing on on religious education. But now the hybrid thing is coming up with the Islamic teaching and the religious education. There has been this secular education also, added with those things. That is called Islamic hybrid school, something like that. So madrasa is like in a different form. There is a school which is like giving religious education, but at the same time it is giving all kind of education. Then there is a pure madrasa which is like restricting itself to the religious education. So there are different forms. So curriculum are not different. Yes, of course it's different from madrasa to the schools, and they are competing. But especially not the madrasa student. This hybrid Islamic schools, they are producing a good number of students, and bringing and giving a middle class to the Muslims. So yeah, Manzoor, can I come in? please. So I am Javed, and I would like to clarify the difference between madrasa and school. Actually, madrasa is an Arabic word, the place where learning is provided. Something, like the opportunity for learning, teaching is done. So, like I am from UP, as Manzoor mentioned about the madrasas. So, there are maktabs and then madrasas. Maktabs basically, you can say equivalent to class 5th. And if you go to Uttar Pradesh, so you will find, like in every village where, sizable population of Muslims are there, and even less population are there, they are managing madrasas. So, like, I did my PhD from JNU, and I am a kind of trained economist. I worked with CBGA and for around 17 years. Now I am teaching in a university in Aligarh. So I did my, like, education from madrasa only.
and it is in Lucknow. So what was happening that mostly bigger madrasas were affiliated to different universities, like the Madrasa Darul Uloom is affiliated with Aligarh Muslim University, with Lucknow University, with Jamia Millia Islamia. So when I completed my madrasa degree, then I moved to Jamia Millia Islamia, and I did from my BA Economics and MA Economics from there. So, like you ask me that how people were going into jobs after, like completing their education from madrasas. So usually they used to, like have, degrees equivalent to, like madrasa boards. So madrasa boards, you will find UP in Bihar and other places. I don't have any idea about Himachal Pradesh. But many, like states are having madrasa board. So usually, like those who are in madrasas, they, like appeared in the exam of madrasa board. So they have their degrees, like equivalent to 12th, graduation and post-graduation. So those degrees were recognized in every exams. So just, like I wanted to clarify that the system was there, in the government system. Government was recognized through madrasa boards. But the example, like I gave myself was specifically the madrasa which is not part of any board, but many, like universities were recognized because of their, like quality education and their, like educational services, which are, like renowned globally, actually, I would say, renowned, like at the global level. So these are the examples. I know many of my colleagues, they did, like their madrasa education, but they are in bureaucracy. Sir, thanks for clarification. You have given the vivid picture of madrasa and schools. They have the different, you see, their own board, madrasa boards, and the degrees are equivalent to the universities, other universities also. So thank you very much for the information given. Thank you. Hello, am I audible? Yeah. I'm Dr. Shahid from Pune College. I I did my PhD from Aligarh Muslim University. I'm from Banaras. So my question is on the very basics of the Constitution. Uh, as you have told that Dr. B.R. Ambedkar wants to empower minority or other communities, uh, down to the section of the society, is there any flaw in the Constitution that makes successful to these powers? Those are against the very basic principles of the Constitution. We can see here since 2014 or later, or it's many times some powers, some rulers or some people come in power through this democratic system. They are destroying the very basic principles of the Constitution. Thank you, Sahid Sahab. You know what? Uh, Ambedkar drafted this and put everything, whatever he had, to this, and given uh, one caveat actually, and he said that एक जनरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसको चलाता है वो उसका जो है कैसे यूज करता है, इंप्लीमेंट कैसे करता है, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है चीजें इंप्लीमेंट, वो सक्सेस या डिक्लाइन की बात होगी जो है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लॉज नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉज है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है जब अंबेडकर वॉज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फॉर हिंदू कोड bill when he was introducing it, and there was a debate going on कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, and he was so frustrated with the then law minister. He said, bring the constitution, I'll burn it down because तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। Now he himself was frustrated the way it has been implemented by the then government at that time. And then finally he decided, in Nagpur to have
this converted to Buddhism, this whole idea. But he himself got frustrated, after 6-7 years with the constitution. So constitution was not flawed. Constitution was not flawed. It is those who come to the power and interpret, reinterpret it, and add something. And addition is, Ambedkar himself has said, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है अमेंडमेंट के लिए जो है चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि हर जनरेशन अपने हिसाब से चीजों को जो है इंटरप्रेट करेगा और उसके हिसाब से उस प्रोग्रेसिवनेस को जो है इम्बाइब करता जाएगा। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फ्रेमवर्क, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, जहां पे मैंने कहा है कि जो है करंट गवर्नमेंट यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस थिंग अपने मुताबिक जो है वो रूलिंग इंटरप्रिटेशन का फ्रेमवर्क है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है जो है। जी सर, अगर कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती उसमें जिसमें कि जो कमजोर तबका है वो खुद को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता, तो शायद वो ऐसा ना कर पाते। बिल्कुल सही बात है। और आप देखेंगे कि जो मैं थोड़ा सा इशारा करने की भी कोशिश किया था कि जो है स्टेट जो है 1947 के बाद वो डिसाइड करता है कि हमको किसको प्रिफर करना है। अच्छा, स्टेट आप जब देखेंगे स्टेट का डिफिनेशन क्या है, एक जगह पे आता है पॉलिटिक्स में जो ये स्टेट का डिफिनेशन है, और हु हैज ऑथोरिटी टू एलोकेट द वैल्यूज, जिसके पास ऑथोरिटी है कि वो वैल्यू को एलोकेट कर सके, स्टेट हैज दैट पावर। अब स्टेट किसके हाथ में था, इसके बारे में भी बहुत सारी जो है चर्चाएं हैं कि स्टेट में कौन लोग थे, कास्ट कॉम्पोजिशन क्या था, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो क्या कास्ट कॉम्पोजिशन था। तो वो ऑब्वियसली जो है एक हिंदू डोमिनेंट एक पिक्चर तस्वीर आएगी आपके सामने जो है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमें ये जो माइनॉरिटीज का जो पूरा हिसाब किताब है उसको यहाँ पे अभी रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ओनली दे they haven't extended the reservation benefit to the OBC क्लास। उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और जाके 92 में जो है वो चीजें जो है मुकम्मल हो रही जो है। उन्होंने सिर्फ SC ST के लिए जो है चीजें वहां पे रखी थी। उनको ये डर था, ये कन्वर्जन का जो बहुत बड़ा जो उनका एक आइडिया था ना कि जो है अगर ये नहीं करेंगे, इनको नहीं रोकेंगे, तो वो कहीं और चले जाएंगे और एक डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, उससे उनकी अपनी जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उनको तो दिया, लेकिन OBC को भी नहीं दिया, एंड देन माइनॉरिटीज को तो ऑब्वियसली नहीं दिया जो है। आप देखोगे कि बुद्धिज्म को 1956 सॉरी सिख एंड बुद्धिज्म को दे इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिजर्वेशन पॉलिसीज 1956 में, और उसमें उसके बाद से जो है एक जगह और उनको जो है कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के लिए नहीं है जो है। और इसीलिए जब नवीन साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि जो है उनको जो है लीगली जो है एक्सटेंड कर दिया जाए, इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता जो है। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द, मतलब ये बिल्कुल इलीट क्लास का जो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में हो, वो इस पे एग्री नहीं करेगा कभी भी जो है, वो इम्पॉसिबल है। इसका इसका मंजूर मैं एक उदाहरण दूं। 1951 में बाबा साहब को काज रोल करने जो कि 7th पास था उसने हराया। जो अभी आपने कम्युनल अवार्ड वाला जो बात एडल्टेरियंस का। बोला, हाँ। तो उसके आधार पे इसका मतलब आप सामान्य तौर से एनालिसिस करते जाइए पूरा भारत की डेमोक्रेसी का, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूम जाती जो आपने शुरुआत में बोली। आई थिंक ये हमको दोबारा अब, लेकिन तब के और अब के वक्त में थोड़ा फर्क आ सकता है। क्योंकि मैं तो जमीन पर काम करता रहता हूँ, तो उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि अब लोगों में थोड़ी चेतना की संभावना उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और शायद उसको एक दिशा की जरूरत है, वो दिशा उनको नहीं मिल पा रही, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई थिंक इफ यू एनालाइज द होल थिंग, व्हाट हैपेंड इन द यूपी थ्रू द काशीराम, it is the same one, because he migrated from Maharashtra and landed here in Uttar Pradesh and developed the government many times. So this is also big example. Thanks a lot once again. Thank you. Sorry. Yeah. Sorry for intervening. Sorry.
Dr. Vinod? डॉक्टर और कोई विनोद? प्रश्न? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा कोई और प्रश्न हो तो। हाँ, नहीं, प्रश्न नहीं ठीक, आ रहे समय थे। भी हो गया है और या सबकी डिनर का टाइम हो गया है। एंड बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। मेरा कैमरा चलिए, क्यों नहीं आ रहा है भाई? मैं क्लिक कर रहा हूँ, open नहीं हो रहा है। कभी मेवों पे स्टडी करने राजस्थान आ जाना, आपका स्वागत है, पधारो सावट है राजस्थान में। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, मंजूर भाई वो विनोद जी, जी सर, विनोद जी जी, थैंक यू हाँ सर, थैंक सर। यू, बहुत अच्छा है, थैंक यू। मंजूर अली साहब, या सब बहुत धन्यवाद है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो देखेंगे बाद में 75 लेक्चर्स होने के बाद बहुत अर्जे से बहुत ख्वाहिश है लोगों को क्या करना है कैसा करना है। आई थिंक वी हाउ टू डिस्कस एंडिंग 10 lectures is the way forward to everything. Then we have to see. Before that, we have to discuss all those things. Whoever they have ideas to put into the discussion, and then we can do. Anyway, thank you very much. Thank you. थैंक यू You नूतन। did, थैंक you यू। did a good job. देखेंगे कैसा है, वो भरोसा भी रहना पड़ेगा भविष्य को, वो छोड़ना नहीं है। थैंक यू। या मंजूर दैट्स भाई, सो। मैंने तो इंट्रोडक्शन नहीं कराया। लक्ष्मैया सर सीडीएस के चेयरपर्सन है, मल्लीप्लाई लक्ष्मैया, जो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, इट वाज कमिंग फ्रॉम। नहीं, उनके किसी और नाम से लॉगिन किया शायद अच्छा, उन्होंने। ओके ओके ओके, आई जी थॉट। जी। ओके। नहीं, वो तो क्या है वो ये प्रश्न तो बहुत आ रहा है, वो आप अच्छा से समाधान दे दिया, मगर एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बुरा अच्छा नहीं रहता। वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रहे तो अच्छा होता, कुछ बुरा भी रहे तो अच्छा लोग आए, तो वही अम्बेडकर ने बताया, वो कोटेशन तो आप बहुत लोगों को मालूम है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना अकेला वो सब्जेक्ट नहीं रहना, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना के मूवमेंट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। बचाओ बोले तो उसके चले जाता, पीछे चले जाता, बचाने के क्या है? ऐसी बचा के ऐसे रखे तो भी कैसे रहे? वो भी कर रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रखे तो आप उसका काम उस कर ले रहे हैं। वो तो अलग बात है, वो उसका एगेनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे आर डूइंग, ईडब्ल्यूएस, so many things they against the constitution, but they are doing, they are not changing any constitution, they are not changing anything, but they are doing on their own. But this should be fight it out. The constitution is a fundamental protection and fundamental weapon. That weapon, it has to be help to the movements, whoever they marginalize, whoever they are suffering. Anyway, thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू टू एवरीवन, या थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू मंजूर एंड एवरीवन, ओके, विनोद, थैंक बाय। यू। नाइस बाय मीटिंग बाय, यू बाय एवरीवन। बाय। थैंक्स ऑल। Thank you. Thank you.